Madhusudan. Our next speaker is Mr. Praveen Bhandari. He is a science graduate with multiple certifications in IT, and he has dedicated nearly 3 decades to business development and marketing. His diverse experience spans various sectors including education, IT, digital security and surveillance, advertising, marketing consulting and electronic retail chains. Having spent over 25 years outside India, Mr. Parveen has worked as a business consultant for numerous retail and manufacturing businesses. He upholds his personal philosophy, connecting the dots, which emphasizes building connections with as many people as possible and collaboratively seeking ideas for future success. The topic of his presentation is neither top line nor bottom line, it's all about the timeline. Please come. Thank you, sir. Thank you very much. I'm good. I can good. Thank you, sir. Thank you very much. And thanks for giving this opportunity to talk to you all regarding marketing in the industry of batteries. Wherever I have been for my presentations, I find that I am the odd one out. Wherever, whatever is the industry, I don't know anything about the industry, and I talk about my topic, that is marketing, and try and relate it to the industry people, those who are sitting in front of me. I don't know B of battery except that I am a user of batteries. My car has a battery, my inverter has a battery, and recently we changed some batteries and land up buying a particular brand of battery because we don't want to take attention of what happens to the battery next 3-4 years. तो ये सब चलता रहता है। बैटरी का इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है, नॉलेज सब आपके पास है। जो मैं यहाँ पर बोलूँगा उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंटेशन नहीं है, डिस्कशन सेशन है, चलेगा? स्पेशल थैंक्स टू जेंटलमैन दुर्गेश जी, जिन्होंने एक्चुअली कुछ ऐसा बना कि हम लोग बैठे हुए थे, अरविंद जी, दुर्गेश जी और कुछ लोग, और हमने सोचा कि कुछ कॉन्फ्रेंस होने वाला है तो इस बार कुछ मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। दुर्गेश जी ने बताया कि इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं होते हैं, जिसका जैसा दिल करता है मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, साल में 2 बार बैठते हैं कि अगले 6 महीने ये काम करेंगे। प्लान बनता है, बहुत बड़ा प्लान बनता है, लेकिन वो फिजल आउट हो जाते हैं महीने में, 2 महीने में, और उनके रिजल्ट्स जो आने चाहिए थे वो भी नहीं आते हैं, और जो पैसा खर्चा हुआ मार्केटिंग के ऊपर वो खर्चा खत्म, राइट ऑफ करना पड़ता है। यही सब हमने डिस्कस किया था। और उसके अलावा कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आजकल आप देखेंगे तो गली मोहल्ले में बहुत बैठे हैं, फ्रीलांसर्स बैठे हैं और आपको बोलेंगे ये हमारा महीने का रिटेलरशिप है और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हम आपके लिए करेंगे और इसका आपको ये बेनिफिट होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करते हैं, आपके पोस्ट बनते हैं, प्रमोट होते हैं, कुछ लोगों को नजर भी आते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट आपने सोचा था वो बेनिफिट हुआ नहीं। अल्टीमेटली बेनिफिट आप कहाँ से मेजर करते हैं? बेनिफिट आप मेजर करते हैं अपनी सेल से। तो सेल के ऊपर अगर प्रोपोर्शनेट इफेक्ट नहीं आता है तो वो डेफिनेटली वो कुछ इफेक्ट उसका आया नहीं। तो कहना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आज का बेस्ट मार्केटिंग और इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है, मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं काम करेगा, कुछ लोकेशंस हैं जहाँ काम करेगा, और मैक्सिमम लोकेशंस वहाँ पर वो हैं जहाँ पर कन्वेंशनल मीडिया और लेटेस्ट मॉडर्न मीडिया दोनों को अगर कंबाइन करके यूज करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा।
सो ये पूरा प्रेजेंटेशन, ये पूरा डिस्कशन उसी के ऊपर है. लेट्स टेक इट फॉरवर्ड. So we'll talk about, the topic is neither the top line nor the bottom line. सबको मालूम है टॉप लाइन क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होता है. टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, क्या कमाया हमने, क्या पैसा आया. बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट. तो ना तो हम टॉप लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा, ना बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइम लाइन की. टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिजनेस में. अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एक टाइम पर आती हैं. अगर आपने अपॉर्चुनिटी ले ली तो आप कुछ कर लेते हैं, अगर नहीं ले पाए तो अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी, लेकिन उस टाइम पर भी आप अवेलेबल हैं या नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. सो टाइम लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये सारा डिस्कशन टाइम लाइन बेस पे रखेंगे कि मार्केटिंग में टाइम लाइन का क्या बेनिफिट होता है. एवरी बिजनेस एस्पायर्स टू ग्रो. आप में से कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसको की फीलिंग है कि मेरे को अब ग्रोथ नहीं चाहिए, जो चल रहा है उसको चलने दो, शायद कोई नहीं होगा. सबको ग्रो करना ही है और वो ग्रोथ सबको चाहिए. लेकिन उस ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं? उस ग्रोथ के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, कल हम अपने बिजनेस में वापस जाएंगे और फिर अगले दिन हम क्या करने वाले हैं? एक टिपिकल दिन की शुरुआत. और टिपिकल दिन की शुरुआत कैसे करते हैं अपने बिजनेस में? मैं उस टाइम को, जो दिन की शुरुआत होती है ना, उस टाइम को मैं जनरली बोलता हूँ द बिग बॉस टाइम. एक बिग बॉस आते हैं आप लोग अपने ऑफिस में और कुछ एक चीजें हैं जो आपकी रूटीन में है, वो आप करते हैं. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग अगर ये नहीं करते तो. आप अपनी सेल्स टीम के साथ बात करते हैं, आप अपनी ऑपरेशंस और फाइनेंस टीम के साथ बात करते हैं. सेल्स टीम के बारे में, सेल्स टीम के साथ क्या बात करते हैं? टॉप लाइन के बारे में. फाइनेंस ऑपरेशंस टीम के साथ क्या बात करते हैं? बॉटम लाइन के बारे में. और क्या बात करते हैं? और ये डेली रूटीन होती है. सुबह आते ही बुला लेते हैं, आज तो मेरे को कुछ करना ही है. वो क्या करना है? होता है सबके साथ, भैया टारगेट पूरे करने हैं, सेल बढ़ाओ, कुछ भी करो. पहली बार सेल्स टीम के साथ जो सुबह हम करते हैं. और जितना ऑपरेशंस एंड फाइनेंस टीम के साथ कुछ भी करो, कॉस्ट कटिंग करो, प्रॉफिट बढ़ाओ. इसके अलावा हम क्या बात करते हैं? हमें भी दिमाग में ये दो बातें हम डेफिनेटली करते हैं और हम दो टीम्स के साथ ही करते हैं. और ये दो टीम्स क्या करती हैं? हाउ टू ब्रिंग ग्रोथ इन टॉप लाइन, बॉटम लाइन. करें तो करें क्या? बॉस ने तो बोल दिया कि भैया सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, लेकिन कैसे? क्या करें उसके लिए? आज सेल बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करें? आज प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या करें? तो अल्टीमेटली क्या करते हैं लोग? एनी आइडिया? आपकी सेल्स टीम क्या करती है? क्या करती है सेल बढ़ाने के लिए? क्या करती है? हाँ जी, कोल्ड कॉलिंग लेके बैठ जाते हैं और 10 मिनट के बाद अपना ब्रेक. हाँ जी, डिस्काउंट्स लगा दो. सर मेरे को डिस्काउंट दे दो, वो काफी वहां पर सेल पे इजाफी कर दूंगा. बहुत अच्छा. हाँ जी, स्कीम्स के लिए आपसे पूछते हैं कि सर मेरे को कोई स्कीम दे दो, मेरे को उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक स्कीम देनी है, उसके डीलर्स तैयार बैठे हैं इस स्कीम पे और ये सीजन का काम शुरू होने वाला है और हम अच्छा अपनी सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू हमारा आ सकता है. यही सोचते हैं. और उसके अलावा जब ये काम नहीं बनता तो क्या सोचते हैं? यार वहां पर एक अच्छी जॉब वैकेंसी निकली हुई है तो कम से कम अगले 6 महीने तो अच्छे निकल ही जाएंगे. एवरी न्यू जॉब हैज अ हनीमून पीरियड. तो वो 6 महीने वहां निकालते हैं, वहां पर भी सुबह बिग बॉस टाइम करेंगे, उसके बाद फिर एक नई जॉब ढूंढ लेंगे. होता अल्टीमेटली नहीं है, लेकिन आपके लिए वो ऑप्शन नहीं. आप भूल सकते हैं कुछ ऐसा कि अगले 6 महीने भी कुछ और कर लेंगे, वहां से कमा लेंगे. नहीं, हमारे लिए वो ऑप्शन नहीं है. तो हमें तो जो है इसी से करना है. और सेकेंडली करना कि इसी टीम के साथ है, ये अपने दिमाग में हमेशा रखिए. टीम को रिटेन करने की कोशिश करिए. नई टीम बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है. उसके पहले जो 6 महीने का हनीमून का एक्सपेंस आप उठाते हैं ना, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. उसको ट्रेन करना, उसको अपना सारा कस्टमर बेस के बारे में बताना, उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, उसको अपने विजन के बारे में बताना, अपने मिशन के बारे में बताना. उसके बाद 6 महीने बाद वो दूसरी जगह चला जाता है जब आपने उसकी पूरी ट्रेनिंग कर दी. और वो ट्रेनिंग किसके काम आएगी? जहां वो नेक्स्ट जा रहा है, उनके काम आएगी.
तो अपनी टीम को भी रिटेन करना है, उन्हीं से काम करवाना है, अपने एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट करना है और अपनी सेल को भी बढ़ाना है, अपने बिजनेस को भी बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है उस पर बात करते हैं। मेरे हिसाब से आई वुड से ग्रोथ इज इजी। अगर हमें पता हो कि व्हाट ब्रिंग्स ग्रोथ, वो पता होना बहुत जरूरी है कि ग्रोथ आएगी कैसे। Am I clear अभी तक जो चल रहा है? ठीक है ना? अगर कोई क्वेश्चन हो तो बीच में, बल्कि आपके इनपुट्स विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। Is it a problem? Okay. So okay, I'll try and fix it then. Fine. So if we know how the growth comes or what are the factors which can bring the growth, then we'll be able to bring the growth. So if anybody can contribute in that, what can bring the growth? अगर हमने बात की थी, yeah, please. The systems, automated processes and systems, with awareness of your product, awareness to the customer. Yes, of course, yes, definitely, that can bring growth. So, better service, yes, very important, very important. So that can also bring growth. Quality of your product can bring the growth, yes. So you do everything. Thank you, sir. Okay, so these are basically things which we all know that these will only bring the growth, right? But we'll try to understand one more thing here. When we talk about the business growth, though we say forget about top line and bottom line, right? We'll talk about the timeline, but I would still say a philosopher, a visionary businessman will always think that work to improve your top line, bottom line will improve automatically. Do you all agree with this? Yes. You increase the sale, forget about the cost cutting, forget about the profitability, everything will come on its own. You don't have to run behind the money. You don't have to run behind the customers. Channelize them to yourself. Increase the sale. Mr. Jha, sir है? हाँ, कल शाम को हम कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था आपको मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ. We have a point to discuss here. He says that I have a very different philosophy. I don't run after my customers. I don't run after my money. I have a very different philosophy. People come to me, and that is what is called business. If people come to you, people know about you, they come to you. That is businesses, and that is what we are here for. कि ऐसा कुछ हो जाए कि लोग अपने आप आए. And whatever I do it ethically, honestly, with all the sincerity and the quality work. Right? So, going by this philosophy, I think we all agree with that. Let's understand the growth factors. Growth factors, try to understand the growth factors, and we will understand the growth factors in top line. What are the growth factors in top line and what are the growth factors in bottom line? Very easy, very simple to understand. Top line growth, we talk about revenue emphasis. Matlab, we need more revenue. To get more revenue, what do we need? We need more sale. Very clear? Right? Very easy to understand. And to get more sale, we need more market share. Nothing difficult in this. Anybody can understand this? Similarly, for bottom line growth, we need more profit. To get more profit, we need cost cutting. To get and also the operational efficiency, optimum utilization of your resources. If you are able to make with your factory, with your plant, 5,000 batteries, and with that same plant, with the same resources, you are able to increase your production by even 10%, that will give you a tremendous growth. Right? So these are the factors which work for top line growth and the bottom line growth. If we are talking about top line growth going by a visionary philosophy, then which one do you think is the most critical one out of all these? Increasing the revenue is critical, increasing the sale to get this revenue is difficult or critical, or increasing the market share to get this effect and to get this effect finally is critical. Of course, if we are able to increase our market share,
Nothing can stop us. Ultimately, that is the intent. Increase your market share. आज इतनी जगह में काम कर रहे हैं, कल इतनी जगह में काम करेंगे, इतनी जगह में काम करेंगे. We are increasing our customer base from 100 to 1000 and 1000 to 100,000 and so on. And automatically our top line will grow. Our sales will grow, our revenue will grow. Nothing can stop us. Now, what is the strategy for top line growth? There are 4 factors we will talk about here. The first one is marketing activities. That is to increase the brand visibility. आपका ब्रांड लोगों को कितनी बार नजर आता है, दिन में, महीने में, साल में, कहाँ नजर आता है? आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी वहां है जहां लोग हैं. ब्रांड विजिबल है लेकिन वहां लोग ही नहीं है, किसी को पता ही. So we need to have the right strategy in place for that. A very strong channel relationship. Durgesh ji gave me a chance to speak to some of his dealers and distributors, and he told me that when you are doing this study or the survey of these dealers and distributors, don't keep in mind my brand. Don't keep in mind my brand specifically. When you are doing this survey, when you are trying to understand the battery industry, then keep in mind that you are doing it for the industry, the battery industry. Because if I am facing this problem, maybe another brand also is facing similar or slightly different problem. But more or less the problems are going to be same. Right? So he gave me a chance to speak to his couple of dealers and distributors, and from there we gathered a lot of information, and based on that only we created this full presentation. A strong channel relationship. What is strong channel relationship in your industry? We try to understand from there. Brand endorsement, very important. Brand ambassador. Have you all worked with some brand ambassadors for your brands? Some have. You have worked. I know that. Anybody else who has ever signed up a brand ambassador? Maybe Virat Kohli or Shah Rukh Khan or right. So brand ambassador, do you think it's important? Brand ambassador for any product or to make a visibility high, a brand ambassador is important? According to me, brand ambassador is very important. You cannot do without a brand ambassador. So today we will finalize, while sitting here, we will finalize who is going to be brand ambassador for your brand. We will finalize. If we don't finalize, we will not get up from here. And I will not finish my presentation, sorry. Right? If we are not able to finalize that, our brand ambassador today. Okay? And सबसे महंगे वाला. So we'll talk about that. And when we do something, we must keep our customer informed. To keep our customer informed, what kind of channel, what kind of media we should use, conventional or modern media, we'll talk about that as well. So starting with the marketing activities, you will find it very, very basic, the activities we are going to talk about. And secondly, this presentation is all for keeping in mind a very narrow and focused presentation for battery manufacturers for solar and inverter technologies. Right? So since we were working in a very narrow group, so we thought, okay, let's do a presentation for that. And similar or slightly tweaked presentation will work for other industries as well. If you are into raw material or you are into some tubular bags or whatsoever, I don't know really all those names. तो उनके लिए भी कुछ डिफरेंट करके, लेकिन काम तो वही करना है, प्रेजेंटेशन तो वही है, मार्केटिंग के थोड़ा सा मीडिया चेंज हो जाएगा. Do you understand this? जो दिखता है वो बिकता है, and that is what marketing is about. जो दिखता है वो बिकता है, right? और उसी के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, दिखाने के लिए. और क्या करते हैं उसके लिए? Very basic, very conventional. You start with. What is the most conventional, most basic thing you can do for your marketing initiative? Most basic, अगर मैं बोलूँ कि आपको सबसे एक हल्का वाला कुछ काम करना है for your marketing initiative, what will you do? And I think all industry owners and all manufacturers, MSME types, they do it. जो मुझे लगता है. Okay, I will tell you. Is it like pamphlets, inserts करा दो, newspaper में distribution करवा दो?
रिक्शा पे ब्रांडिंग बहुत चलती है, ई रिक्शा के पीछे पूरा ब्रांडिंग करा दो, या फिर मेक अ रिक्शा with your brand and with your speaker inside talking about your brand which will bring the visibility in the market. Make it run for a couple of hours in the evening, couple of hours in the morning, and let it announce about your product, let it announce about your brand and your schemes also. Let it run in the market areas. This works. Does this work? Rickshaw branding or pamphlets? In some of the areas, rather I would say in tier 2 cities, it's a very effective way of doing things. Very effective. I'm not talking about tier 1 cities, but tier 2, tier 3, this is very effective. Shop gates and posters and danglers, even in tier 1. You have a shop and you make a specific gate for it, and that has a complete branding. You have posters inside your shop, outside the shop, then you have danglers, hanging there which are talking about your schemes during festival times and whatsoever. We have shutters and wall painting. Again, tier 2 works very well, tier 3 works very well. आप डीलर्स के शटर्स के ऊपर पेंट करा तो अपना ब्रांड दे मोर देन हैप्पी. एंड इनफैक्ट दिस आइडिया केम फ्रॉम देम ओनली कि सर ये हमारा शटर खराब पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप बोलो ना उनको पेंट करवा रहे हैं. आपको 10 शटर की तो आपको विजिबिलिटी मिली गया, या 15 शटर का विजिबिलिटी तो आपको मिली गया, आपका फ्री में ब्रांडिंग हो गया. वर्क्स वेरी बेटर. इवेंट्स का स्पॉन्सरशिप. हाउ मेनी ऑफ यू डू इवेंट्स sponsorship? Events तो होते ही है, whether it's a tier 1 city or tier 2 city or tier 3 city. And events sponsorship, when we talk about, we are not here talking only about Diwali event, Dussehra event, Holi event, उनकी sponsorship करते हैं. We are talking about here more than that. When we said, I said in the beginning that you must talk about your visibility, talk about your brand, where the people are there to see you, to listen to you. आपके masses आज कहाँ बैठे हैं आपको पता होने चाहिए. आपका masses customer का masses कहाँ है? Where is your current customer mass? Where is your future customer mass? You must know about that. Your future customer mass. आज से 10 साल बाद जो आपका कस्टमर बनेगा, आज वो कहाँ होगा? मोस्ट प्रॉब्लम कहाँ होगा? जो 10 साल बाद आपका कस्टमर है, आज वो कहाँ है? स्कूल में. कर दो स्कूल्स के इवेंट स्पॉन्सर, स्पोर्ट्स डे में स्पॉन्सरशिप कर दो, एनुअल डेज में स्पॉन्सरशिप कर दो. अल्टीमेटली योर कस्टमर इज देयर हु वुड नो. आप स्कूल्स के कुछ इवेंट्स, यू कैन मेक सम इवेंट्स फॉर द स्कूल्स. अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी काइंड ऑफ इवेंट के ऊपर ड्राइंग कॉम्पिटिशन, या डिबेट कॉम्पिटिशन, या साइंस प्रोजेक्ट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड दे यू स्पॉन्सर as a battery manufacturer. So parents also would know, students also would know that I have this brand certificate at my home. Talking about again the brand which I have visited, Apex brand. If somebody says that इस साल Apex की बैटरी किसको मिली? Sorry, इस साल Apex का ट्रॉफी किसको मिला? इस बार Apex का स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला? That will create your brand right from the childhood itself. जो अगले 10 साल बाद भी आपका कस्टमर उसको पता है कि एपेक्स ही होता है जो होता है, तो वहीं से ब्रांड बनाना शुरू कर दो ना, जहां पर वो अभी है. बड़ा होते होते आपके पास भी आता है, उसको कहाँ जाना है? City beautification and branding. We'll talk about this. Very effective. City beautification and branding. I'll talk about a specific industry also here. Talks and lectures and storage technology. The kind of these things today they are become talk of the town. I would say sustainable energy technology, or resources. Everybody wants to know about it. Green energy. Everybody wants to know about it, right? Then EVs. Since the time EVs have come into existence, or people want to go for EVs, they want to know more about green energy. They want to know about this technology. Why don't you tie up with some institutes and technology colleges in your cities? आप उन colleges के साथ tie up करो and make presentations in those colleges where your customer is again there. Those students are going to be out of the colleges maybe after 3 years, 4 years, and they would know what your brand is. From there itself they would know. But you make a presentation in that college or in that institute, right, on sustainable energy resources, on storage technologies. Do these kind of things. These are all conventional methods which we have been doing, but if you do such events which are there happening in the schools and societies, city beautification and branding kind of projects, and then talks and lectures in technology institutes,
they will give you a lot of effect. Because you will be now related or associated with something in higher level. Some of the pictures which I took in while doing the survey, we found one of the dealers who was selling one particular brand of batteries we were doing a survey for. So when we talk about the gates, we talk about this kind of a gate. Make this kind of a gate with your battery branding on that. Makes a lot of difference. Does it? This kind of a gate? It makes a lot of difference, I would say. If you see the other shops just next to him, his shop looks really, in a bad condition. So the moment you make this gate in front of the shop, just an idea, not necessarily that you have to do it or this is the only way to do it, right? But it makes a lot of difference. This is another shop we visited. Now, if nothing much can be done or the way he has handled his shop looks pathetic, but what you can do is, probably in this kind of place, what you can do is make a kind of a shelf here and put some battery dummies on that, not your stock. There are some battery dummies also there or no? There are dummies. So use those dummies for display here. Make a shelf here, put those batteries dummies, of your brand, to make a visibility, to show that it's there. Or they put some standees outside those shops, the lightning ones, the ones which are backlit type. In the evening, they are more prominent, they are more visible. So these are some ideas. Eye-catching. Whatever you do, it should be eye-catching. The idea is that it should catch number of eyes. City beautification. देखें इस तरह की चीजें आपने. Forget this rock garden, चंडीगढ़ का, काफी लोगों ने देखा होगा. It's all out of trash. A beautiful place, all out of trash. आपके पास भी बहुत सारा trash होगा, जो कहीं यूज नहीं होने वाला. कर दो उसको यूज ब्यूटिफिकेशन में. आपके ये जो कंटेनर्स हैं, इनमें कुछ फ्लावर पॉट्स और प्लांट्स वगैरह लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं? लग सकते हैं, लगाओ. बात करो अपने म्यूनिसिपैलिटीज में, कुछ डिवाइडर के ऊपर प्लांट्स लगा दो विद योर ब्रांडिंग ऑन इट. एंड व्हाई डिवाइडर? अगेन आई विल गो बैक वेयर योर कस्टमर बेस इज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. स्कूल्स में एक उनको बोलो कि विल अडॉप्ट दिस एरिया, and this area beautification, gardening, landscaping, everything is our cost. Put these battery shells there with your branding on it and make it a selfie point. Make it a selfie point today. Selfie is a very big thing. Wherever you go, the first thing you do is take a selfie. And then क्या करना है सेल्फी लेने के बाद? सोशल मीडिया में डाल देना, होगा ही ना आपकी मार्केटिंग. That is what you want. Make selfie points. It's a couple of weeks back I visited a very high profile industry office, and that is Apollo Tyres office. Apollo Tyres office is one of the best offices I have seen in my life. That is in Gurgaon, close to Delhi, right? I have visited 25 countries plus till date and seen number of offices everywhere in the world, right? But this was one of the best offices I have seen. Best offices. I'll not talk much in detail, but one of the beauty of that office was they had 20 selfie points. For 20 selfie points in Apollo Tyres office itself. Why? Because they want people to take selfies. Any guest who comes into that office, he will definitely make sure that he will take a selfie at 2-3 different locations. All their staff will take selfies at all those locations and will tag it to their hundreds of friends and masses. The marketing happens automatically. Work on those kind of things. Some of the wall painting kind of things and the shutter painting which I was talking about. Must do it. Your dealers, your distributors, they need it. And if somebody is doing really well, लगा दो उसका प्रीमियम डीलर, क्या दिक्कत है? Agnostic. What is the thumb rule of marketing? Is there any thumb rule of marketing? Marketing is not an expense, it's an investment. Allocate an adequate budget for marketing and follow marketing plan religiously. इसको कहीं नोट करके लिख लो या इसका पोस्टर बना के ऑफिस में लगा दो.
और रोज सुबह इसको पढ़ो. Because we know it when somebody says it, and it takes us only a few hours or maybe a couple of days to forget it. We will never remember it. Why? Because ultimately we end up thinking in the night कि खर्चा है यार, छोड़ो ना. लेकिन ये खर्चा नहीं है. यही आपकी मेन इन्वेस्टमेंट है, और उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है जो आप पहले कर चुके हैं. आपकी करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी है, और उस करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप कुछ लाख की इन्वेस्टमेंट और करते हैं, it will make a lot of difference. It will multiply that your crores investment into multiple crores. Right? So follow this religiously as the thumb rule. What is adequate budget? How much should be the budget? Okay, give me an idea. How much should be a budget for marketing? Give me some ballpark figures or percentage of your turnover. What do you feel? कितना होना चाहिए budget? 1 to 2%? If we are talking about your industry, that is again B2B. If you are talking about B2B, then it should be 1 to 2% of turnover should be the marketing budget. Do you all agree 1 to 2% will be enough? So, and give you last chance. 1 to 2%. So, अगर कितना? Let's say 500 crores is your turnover. So we talk about 1%. That is 5 crores. 5 crores per annum. 5 crores per annum. Ramesh ji has allocated today for marketing. Ramesh ji, I'm quoting it. That you have allocated 5 crores per annum as marketing budget for your company. Can you say that? And it's fairly good, right? Let's see the industry standards. You are perfectly right. It's normally 1 to 3%. And I would say it's not even 1 to 3%. It all depends on your ambition, on your plan, on your vision, on your mission. In what kind of place you are working, what is your mission that you want to work on? Do you want to grow pan-India or you want to go international? All depends on that. So if you are sustaining your business and you're quite happy with that, and you do not want a downfall in the business but want to sustain, and maybe if you can keep growing, then that is enough for you, then you don't even need 1%. But keep 0.5%. That will be required. But you cannot say a zero will do. Zero will never do. The moment you don't have any budget for marketing, you're gone. You're gone, completely gone. It will take you a few moments to vanish on the market. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. What is more important, oxygen or water? Oxygen or water? Oxygen or water? Without oxygen, how many days can you survive? How many days without oxygen? Can you talk about few seconds? That without oxygen you can survive with few seconds. Without water you can survive for few days, right? So, what is oxygen and what is water if we talk about marketing and sale? Marketing, consider that as oxygen, sale is your water. If we don't have a sale or we have a lean time in couple of months of the year, we still survive. But if you don't do marketing, you stop taking oxygen, stop inhaling oxygen, you're gone. Absolutely gone. I'm sorry, I had to quote it. Excite the budget कितना होगा? Excite the budget कितना होगा? हाँ? सर वो वहाँ शुरू होते हैं जहाँ हम खत्म भी कर देते हैं. This is Excite's budget, 4 to 6%, which includes sponsorship of IPL team as well. Imagine what kind of expenditure they have. Because for them, it's an investment. So we spoke about marketing activities, what all we can do. We'll talk now about our channel network. How do we nurture our channel network and how important it is to nurture the channel network. Do you agree with this statement? You buy, sell emotions, not the products. Absolutely. Do you all agree? Product बेचना नहीं है, emotions, relations, that is what matters. End of the day. This is your typical channel, what I understood. You have a factory, you have a distributor, distributor sends it to dealers and dealers give it to the end consumer. A small, simple, basic network of channel you have.
And what all do you do for this channel? You do regular distributors meet. How many you do, I don't know. आपके distributors के लिए आप क्या करते हैं? If they have done good sale, if they have anniversary of their business, or maybe he has his own birthday or wedding anniversary or something, do you ever send a cake to them at least? Or do you remember what is the occasion with the distributor and you need to acknowledge them? You must do it. Regular dealers meet. Dealers who also want to meet. You have so many of dealers. Bring them together at one place. The best place for the dealers to take them is to your factory. Take them to your factory. The dealers, show them how you work, how your factory looks like, how many quality control steps you have, and give them a treatment there, a lunch, dinner, or whatsoever, or take them to some places, club days, and do some technology presentations for them, talk about technology, business, and whatsoever, and after that, incentive scheme-based targets works very well. I have been actually told to cut short on the presentation, the time is less, so I'm running through now. But if anything you want to discuss in detail, we can. Gifts and goodies for the staff works very well. Some of the dealers, they told me that sir, उनके box में पहले वो हमें कुछ umbrella भेजा करते थे, t-shirts भेजते थे, caps भेजते थे, they were very useful. पर अभी आजकल कुछ आ नहीं रहा है. Right? So must work on these kind of things. These things make people happy. Rewards and recognition, very important. If dealers are doing really well or distributors are doing very well, nothing stops you to give them a good reward. Maybe a family trip to Switzerland or a Europe tour, which looks also big and also a very good reward. Training for staff at every level of channel, mere hisab se this is the most important one. How many of you actually conduct trainings for your staff of dealers and distributors? When is the last time that you brought all of them together to do certain training for them? Maybe motivational training, skills training, soft skills training, professional training, any kind of a training. Because if you do some training for them, they will always remember you because you have taught them something new to be more successful in life. Not only for yourself, for them also to be more successful in life, you have taught them something new, and the salesmen who are working at the shops I have seen, maybe they are not even college pass-outs or schools pass-outs. Maybe they are not. Right? And for them, if you are doing a professional training or soft skill training to be a more effective person in life, he will appreciate it for the lifetime. And you will make an emotional relation with him that, this brand conducted this training for me and today I am a different person. So, need to work on all these things. Some goodies, which I just mentioned that you keep sending some goodies, there's no shortage of any, such things. You'll find something new every day in the market. Very effective, something came in my house a few days back. I think it was with Kent Arrow. They gave a pad, a writing pad, a small pad, notepad kind of thing, which had some 1,000 slips in it. And every page has a watermark of Kent Arrow. And it's a magnet type of thing. You just stick it on the fridge with a pen also, a magnetic pen also, which means what? Now every time we have to, note down a message or a shopping list or whatsoever, we just take out that slip and just use that for making those notes or lists. Now that thing has worked very well, I would say. Every time we want to write something or note down something, Kent Arrow. वो Kent Arrow को वो slip उतारो और उसमें लिख दो. That has become a synonym to a writing pad today in our house. वो Kent Arrow की slip पे लिख दो. So people will remember Kent Arrow for lifetime now. So such things work, which make a person repeat your brand again and again to make sure that you see the brand again and again. So make those kind of things. So we talked about strong channel relationship. Now we talk about brand ambassador. And बिना brand ambassador choose किया आज हम यहाँ से नहीं लेंगे. हमने पहले बात कर ली. Very important topic for us. How many of you agree that brand ambassador is required? Your endorsement of the brand is required. We all agree it is required. It gives a boost in the sale. It does. Some of my favorite ones. अगर इसमें से choose कर लेंगे, I don't get any commission from them, but you can always choose one of those. And maybe they will start with some 50 crores and 30 crores, 70 crores in that range. Elon Musk may not come here because he's not started endorsing local brands of India right now.
So, but some of these brand ambassadors are my personal favorite. जरूरत है इनकी? No, not at all. Not at all. Not at all. Is your brand international? Is your brand national? First of all, think that. Your brand is maybe catering to one particular state or couple of states. It's not even pan-India. So do you need to spend so much of money on your brand? और एक बार अगर वो उसने brand ambassador आपने बना भी दिया, maybe it will give you a spike in your sale for a couple of months. And what about after that? After that, it will depend on the quality of your product. If the quality of your product is not good, what will they do? They cannot make sale happen on daily basis if your quality is not good. So forget about that. Ultimately, your brand will always be defined by your customer's experience. Nobody else. You are absolutely right, sir. The quality of your brand and the customer will define your brand. And why not make him your brand ambassador? Simple as that. Every customer turn them into brand ambassadors. एक brand ambassador भी चाहिए. रोज के 10 बनाओ. Let him talk good about your product. That is what a brand ambassador does. At a very big cost. And here he is paying to become brand ambassador for you. He bought your battery and now he has become brand ambassador for you. What a change, and what a change you have made for your product, for your brand. एक ब्रांड एम्बेसडर जिसने अपने घर के लिए इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी कुछ खरीदा, आज वो अपनी पूरी सोसाइटी में बता रहा है ये वाली बैटरी लेना अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वही तो चाहिए था। अमिताभ बच्चन अपनी सोसाइटी में कभी नहीं बताया, शाहरुख खान भी नहीं बताया और लगाएगा भी नहीं। I don't know whether they use लाल तेल और वो सब, I don't know. मैगी खाते हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम। With all due respect to all of them, very successful people they are, with all their hard work in their life. But still, I would say that make your customer, every customer your brand ambassador. Every battery you manufacture leaves from your factory. Make sure that is going to make one brand ambassador for you. क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्वालिटी ही आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी और सस्टेनेबिलिटी देगी आपके बिजनेस को। कस्टमर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? प्रोडक्ट क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी, कन्वीनियंस, ये तीन चीज मांगता है कस्टमर। इसके अलावा चौथी चीज नहीं मांगेगा। इफ यू आर ए कस्टमर, यू विल ऑल्सो नीड दीज थ्री थिंग्स, वॉट एवर प्रोडक्ट यू बाय, वॉट एवर प्रोडक्ट। यू कैनॉट थिंक ऑफ फोर्थ थिंग। सस्ता होना चाहिए नहीं सोचेंगे आप, ये सोचेंगे वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए। अगर खराब हो गया तो यार फटाफट आदमी आएगा, मैंने फोन कर दिया तो फटाफट आदमी आए, चेंज करें और निकले। प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ कोर्स एवरी वांट्स। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पीरियोडिक सर्विस विजिट्स। अगर आपने किसी को बैटरी दी है, मेक श्योर कि आपका कोई आदमी वहां पर महीने में, 2 महीने में या सीजन शुरू होने से पहले एटलीस्ट अपने आप जाता है। दे डोंट हैव टू कॉल यू, दे डोंट हैव टू आस्क यू फॉर द सर्विस विजिट। आफ्टर सेल सर्विस, अगर उसका पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी में तो नहीं चल रहा है, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी बॉस, यू हैव नो ऑप्शन। अगर उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, अगर उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, इफ यू हैव अ मेंटालिटी और अ थिंकिंग और एन एटीट्यूड सेइंग दैट छोड़ो ना यार, अभी तू बाकी काम देख, उसको देख लेंगे, काम देख लेंगे उसको, forget it. He will never talk about your product again to anybody. And today people don't have any shortage of money also. अगर नहीं चल रहा है तो ठीक है यार, दूसरी बैटरी ले क्या खत्म कर, आज के बाद ये वाला ब्रांड नहीं लेना। People are very fast in decision making today when it comes to their convenience. फ्री बैटरी चेकअप कैंप्स, आपकी बैटरी नहीं लगी हुई है वहां पर, सोसाइटी में फ्री बैटरी चेकअप कैंप्स लगा दो। एक्साइट की लगी हुई है, एमरॉन की लगी, लुमिनस की लगी है, माइक्रोटेक की लगी हुई है। सी आई रिमेंबर सो मेनी नेम्स नाउ सडनली इन अ फ्लो आई सेड ऑल दीस 4 नेम्स। सो लगी हुई है कोई भी बैटरी, डजंट मैटर, गो एंड चेक दोस बैटरीज एंड गिव अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक ऑन दोस बैटरीज। सर ये आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है, मैंने पानी कम था या जो भी उसमें डलता है वो डाल दिया है और अगले 1 साल आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। He will become your customer the same day, even if he is using Excite battery, but he will become your customer. अच्छा आप एक काम करो, अपना कार्ड रख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको कॉल करूँगा। और जब भी उसको प्रॉब्लम होगी, sell your brand to him after that.
What stops you? Make sure that it works better than the brand which he was using before. बस उतना आपको करना है. पेपरलेस वारंटी क्लेम सिस्टम. पेपर नहीं है, इनवॉइस तो नहीं है यार, मैंने कहाँ रखी थी मुझे नहीं पता, बैटरी को चेंज करना ही पड़ेगा, तो करते हैं आप ऐसा केस टू केस बेसिस पे कर देते हैं. अगर आप पहचानते हैं उसको कि हाँ यार ऐसा कर देते हैं. पेपरलेस मतलब आप कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, पर मोस्टली लोग कहते हैं कि यार दोज एप्लीकेशंस आर वेरी expensive also, and then the applications are all cloud-based applications. So all your data is going to the cloud, and everybody can use all those, database anywhere. But that's not the truth. The cloud-based applications are also going, keeping your data in your personal and private cloud. It's not going anywhere. अगर आप उस application के ऊपर भी, if you don't want to spend money, I have a solution which is absolutely free of cost. We'll discuss it one-to-one maybe sometime. Absolutely free of cost. Data will, the moment you sell your battery, the data will come to you automatically, not even to dealer or distributor. It will come to you automatically. With his date of birth, with his purchase of battery, with his warranty expiry date, everything it will come to you. And maybe after that, you can make a feedback call also to the customer. Feedback call करते हैं कभी customer को कि आपने ये बैटरी लगवाई है हमारे से, तो उसको हम feedback call कर लें. कुछ सरप्राइज गिफ्ट देते हैं. पहले लोग बोला करते थे कि बैटरी आती थी उसके बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट निकलता था, आजकल कुछ नहीं आता. तो अल्टीमेट प्रेशर, द गिफ्ट एक छोटी सी चीज होती है लेकिन वो प्रेशर बहुत बड़ा देती है. आप लाखों की चीज के ऊपर 100 रुपए का गिफ्ट लेके भी जो खुशी मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती. तो दे दीजिए एक छोटा सा गिफ्ट. फीडबैक एंड रेफरल इंसेंटिव सिस्टम, एक कूपन दे दीजिए उसको कि नेक्स्ट आप किसी भी कस्टमर को रेफर करेंगे, उस कस्टमर को भी इतना डिस्काउंट मिलेगा और आपकी नेक्स्ट परचेज के ऊपर भी आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा. There are number of ways which we can plan for you as an individual, for your business, for your state, for your geography. So third thing we have seen is brand ambassador, and as I said that we will not get up from here unless we decide our brand ambassador. So today we have decided our brand ambassador. Who is the brand ambassador going to be for us? Our ambassador. ठीक है, वो डिसाइड करके हम उठेंगे यार, कर दिया. Keep your customer informed. हम लोग फ्री चेकअप कैंप देते हैं, हम फ्री सर्विस विजिट देते हैं, सब कुछ करते हैं. कस्टमर को बताते हैं ये सब बातें हम. कस्टमर को बताएगा कौन? आप सोच रहे हैं कि वो एक शॉप पे जो सेल्समैन खड़ा है वो आपके बारे में सब कुछ बता देगा? फॉरगेट इट. ही विल ओनली शो 3 डिफरेंट बैटरी ब्रांड्स. सर ये ले लीजिए, बस खत्म. उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है. तो बताना तो आपको ही पड़ेगा अपनी बैटरी के बारे में. बैटरी के बारे में बताने के लिए आपके पास क्या है ऑप्शन? पे पर एड्स है, नेशनल टीवी एड्स हैं, लार्ज साइज होर्डिंग्स हैं, लगवा दो, और एफएम रेडियो एड्स हैं. वेरी कन्वेंशनल मेथड्स. लगता है कर सकते हैं हम ये सब? मत करना, कोई जरूरत नहीं है. ऑल दिस ATL इज नाउअडेज अवेलेबल एट BTL कॉस्ट. ठीक है, और उसके लिए क्या है हमारे पास? वेरी इफेक्टिव येट इकोनॉमिकल चैनल, एंड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि डिजिटल मार्केटिंग अलोन विल वर्क फॉर यू. नहीं, आपको रिक्शा ब्रांडिंग साथ में करनी पड़ेगी, आपको पैम्फलेट भी डालनी ही पड़ेगी न्यूज़पेपर में. आपका एक लड़का चौराहे पे खड़ा होकर पैम्फलेट देगा भी शाम को, वो भी करना पड़ेगा. लेकिन साथ में टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट आपको अपने रील्स बनाने पड़ेंगे. आज लोग ऐसे ऐसे लगे होते हैं और खुद ही हंस रहे होते हैं. ठीक है, वो यूज करो, एंड इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग इट. The 3 platforms which I could think of for your industry are very effective platforms: Instagram, Facebook, and Google Ads. Don't think of any other platform for yourselves. Maybe for a couple of you, I will think of some other platform. Those who are into maybe components manufacturing and raw material manufacturing, I can think of some more platforms, more effective platforms. But those who are into battery manufacturing, don't think of any fourth platform other than these platforms. डिजिटल मार्केटिंग का बजट कितना होना चाहिए? आपका ओवरऑल जो मार्केटिंग बजट है आपने उसको एलोकेट किया, लेट्स से 1% which came to 5 crores. सो उसमें से डिजिटल मीडिया को कितना देना है और कन्वेंशनल मीडिया को कितना देना है? Again, thumb rule. 40 to 50% you will have to allocate to digital marketing of your total budget. डिजिटल मार्केटिंग में खर्चा कहाँ होता है? आपने एक पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम पेज आपका बना हुआ है, उसमें पोस्ट कर देना. खर्चा कहाँ होता है? डिजिटल मार्केटिंग में खर्चा होता है. जो खर्चा होता है पोस्ट बनाने का होता है. पोस्ट बनाना है तो 200-300 रुपए में कोई भी बना देता है. खर्चा होता है.
If you want to do effective digital marketing, there is an expense because you need to boost your promos based on the desired demography. उसके लिए आपका खर्चा होता है, अच्छा खासा खर्चा होता है. Because if you don't promote, don't do a boosting or a paid promotion of your ads in digital media, then your ads are as good as nothing. You are making an ad in UP, you are posting an ad in UP, and you are getting an inquiry from Chennai. Is that any use to you? No. And this is what happens when you don't do it through a consultant or an agency which knows how to use these platforms and what paid promotions are. Then use influencers. एम्बेसडर्स वहाँ पे भी होते हैं, एम्बेसडर्स वहाँ पे भी होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में. सो यू नीड टू यूज योर एम्बेसडर. Absolutely, influencer. He is a right example of influencer. If he talks about some particular brand, then people take it for granted. बिल्कुल ठीक है. So influencer आपको चाहिए. इनके लिए खर्चा होता है. So अभी हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. अब हम सिर्फ एक लास्ट पॉइंट छोटा सा बस रह गया है, उसको एक बार खत्म करके नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स सर. आई एम सो सॉरी. अभी मैंने आपके साथ आई कॉन्टेक्ट ही बंद कर दिया है. मार्केटिंग कैंपेन का प्रोसेस साइकिल क्या है? मार्केटिंग बजट बनाओ, उसके एक्टिविटी का अप्रूवल लो, बजट का अप्रूवल लो. उसके बाद मिक्स ऑफ कन्वेंशनल एंड डिजिटल मीडिया का चेक करो कि हमें करना क्या है. उसके बाद प्री कैंपेन प्रिपरेशन क्या करनी है, पोस्ट कैंपेन एनालिसिस उसका क्या करना है. काम खत्म हो गया. Is that all? This is what we need. उसके रिजल्ट का एनालिसिस करो, काम खत्म हो गया. सर ये काम कभी नहीं खत्म होगा. दिस इज ऑक्सीजन, यू नीड इट एवरी टाइम. सो उसके बाद नेक्स्ट कैंपेन की प्लानिंग करो एंड देन स्टार्ट विद नंबर 1 अगेन. कीप डूइंग इट थ्रू आउट योर लाइफ टिल द टाइम यू हैव योर बिजनेस एंड यू वांट टू कीप रनिंग योर बिजनेस. नथिंग कैन स्टॉप इट. दिस इज व्हाट अ टिपिकल चार्ट इज व्हेन यू मेक अ मार्केटिंग प्लान व्हिच इज डिवाइडेड इनटू वीक्स फॉर a particular month. All your activities divided in days. कि किस दिन किस हफ्ते में क्या एक्टिविटी करनी है, and this chart ideally should be there with you for the whole year. If you sign up a marketing contract with anyone, make sure that sitting the first 10 days, 15 days you spend making this chart for the whole year. अगर आपने 1 महीने का बनाया और उसको शुरू कर दिया काम, कहीं नहीं जाने वाला है. टाइमलाइन क्या होता है? प्री कैंपेन आपकी प्रिपरेशन होती है, कैंपेन का लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद मिड कैंपेन उसकी असेसमेंट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें कुछ गलत तो नहीं जा रहा, जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. उसके बाद कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और फिर पोस्ट कैंपेन उसका एनालिसिस करते हैं. इसमें सबसे क्रिटिकल क्या है? अब सॉरी टाइम का गड़बड़ है, लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल क्या है मैं बहुत जल्दी आपको बता रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ. इसमें सबसे क्रिटिकल ये पोर्शन होता है. So the kind of tools which we use today, it's pretty easy to do these two things. Remember, otherwise जब आप न्यूज़पेपर के बड़े-बड़े एड्स साइन करके दे चुके होते थे, आप ये कस्टमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ट्विकिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे. एक बार आपका प्लान तो बन गया, वो एड तो आएगी ही. अभी आपका जो एड है that is nothing but a post and that post has to be promoted. Whether you promote it or you don't promote it, it's up to you. So all this tweaking work you can do yourself. At any point of time. आज मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अपना कैंपेन लॉन्च किया, कल मैं उसको चेंज कर सकता हूँ. And that will not cost me any money. And that I will not have any damage on my budget as well. कौन करेगा ये सब? बहुत काम हो गया, ये काफी काम है. सीरियसली वो चारों काम कर दे, काफी काम है. कौन करेगा ये सब? सर मेरे को लगा कि लोग कहते हैं कि आइडियाज देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, करने की इच्छा होनी चाहिए टू एक्सिक्यूट देम. राइट? इच्छा है, यू थिंक इट्स देयर, द विल टू डू इट, द विल इज देयर टू डू इट. It is there. Okay? Agreed, sir. As you said, it is there. Right? अगर will है तो हम हैं, हम करेंगे, हम करेंगे. We are here for you. And this is the new initiative that PowerOn has taken to give you a complete marketing consultancy for whatever business you are in related to the battery industry. At your doorsteps whenever you need it. So we are there.
Why power on? I would only say that it's not one-time activity. It needs to be done again and again and again and again. It never stops, right? So instead of keeping your own marketing resource, which will cost you a lot, right, and may not be effective end of the day. So I would say that you can depend on some third party who can take care of it for you. It's a never-ending job, and while you focus on your core business, we take care of marketing. Thank you very much. I wish you all the best for your financial year 24-25 and the years to come. बहुत धन्यवाद सर प्रवीण भंडारी जी का। अच्छा है, बड़ा कठिन है जब समय कम होना जी कि कैसे। नहीं, मैं आपके सम्मान के लिए अपने फेडरेशन के पदाधिकारी आदरणीय नीनू भाई जी और अपने एमपी बाबू से आग्रह करता हूं कि भाई साहब का सम्मान करेंगे प्रतीक चिन्ह देकर। आइए एमपी बाबू, नीनू भाई। प्रवीण भंडारी जी 25 साल विदेश में काम कर कर अपनी मातृभूमि के प्रेम की वजह से फिर वापसी हिंदुस्तान आ गए। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद भाई साहब।